Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Today we have UPSC cancels Pooja's candidature, debars her from future exams. Now, before we understand this news article, let's just understand what is the role of UPSC. What is a UPSC? इसके बारे में हम समझेंगे. Okay, so UPSC basically Union Public Service Commission. Students, especially those who are in fourth grade, imagine you have a big group of people who help run the country. Now, these people are like superheroes, but with different parts, and they work in different parts of the government to make sure everything runs smoothly. In India, we call some of these groups All India Services and Civil Services. So, what is All India Service? All India Service का मतलब क्या होता है? Students, there are three kinds of all India services in our country. First one is IAS. Now, you are all aware of this term. है ना? IAS के साथ तो सबको पता है कि कौन है. Students, IAS stands for Indian Administrative Services. These are those people who are like managers. They help run the government and make sure all the rules are followed. And they work on things like building schools, roads, and hospitals. And then we have IPS. So they are like the police chiefs. And they make sure everyone is safe and that there is law and order. So they basically help fight against crime and maintaining peace wherever they are deployed. And then we have Indian Forest Service. So these are like nature protectors. They take care of the forest and wildlife and they make sure that the environment is protected and that we don't lose our beautiful nature. So basically, people in these services, they work for both the central government and state government, which is why they are called as All India Service. ठीक है, तो ये दोनों के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, and they can be sent to different parts of the country to do their jobs. Now, what is civil service? तो civil service क्या है? Students, civil service are like even a bigger group of those people. So they include all India services, but also many other teams that work only for the central government. ठीक है, अब ये जो सर्विस है, ये किसके लिए काम कर रही है? Both central government, which is at the union, and state government, right? But then we have civil services who mainly work only for central government, and they help with things like collecting taxes, like in Indian Revenue Service, managing trains, Indian Railway Services, and working with international countries like Indian Foreign Service, and we have many more. Okay, so they together constitute what? Civil service. ठीक है? So, civil service constitutes what? All India service plus other services that work only for the central government, like IRS, Indian Railway Service, Indian Revenue Service, Indian Foreign Services. Okay, so these all constitutes and make the civil services. And to become a part of these services, people need to pass a super tough exam called the Civil Services Exam. ओके, तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना पड़ता है. And these civil servants, when they are selected through the exam, they help run the country by making and implementing policies, helping people, and keeping everything in order. So they are important because they make sure the country works well and grows stronger. Now, what is UPSC then? Students, UPSC is an important organization and it's consider it as a big school that selects and trains the people that we talked about earlier who work in the all India services and civil services. So basically, UPSC क्या है? Recruiting agency है. It's a recruiting agency.
ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है टू सेलेक्ट ऑल द सिविल सर्वेंट्स. ओके, एंड तो बेसिकली याद रखना कि सिविल सर्विस की जब हम बात करते हैं तो सिविल सर्विस तो बहुत सारी उसमें सर्विसेज आ जाती हैं. तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी बेसिकली एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है. क्या है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है. तो अगर हम अलग और फीचर्स अगर हम बात करें यूपीएससी का क्या है, सो यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. यूपीएससी इज व्हाट? अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है कि this UPSC has been established by the Constitution of India, which is like the rule book for the whole country. ठीक है, तो यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया था. एंड यूपीएससी इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स 315 टू 323. 315 से लेके 323 के आर्टिकल्स में यूपीएससी के बारे में बात की गई है. And these articles lay out how the UPSC should be set up and what exactly its job. Okay, तो इन सारी चीजों के बारे में इन आर्टिकल्स में कहा गया है. Now, when we talk about the eligibility, students, UPSC has a group of people called members who run it, and these members, including the chairman and other members, are selected. So here's how they are chosen. Basically, the chairman and other members of the UPSC are appointed by none other than our honorable president. Our honorable president selects the member and chairman of UPSC. ठीक है, they are appointed by president of India and they are removed as well by the president only. उनको removal भी जो किया जाता है वो भी president के हाथों ही किया जाता है. When we talk about the qualification, students, there are no as such specific qualification, educational qualification mentioned for being a member of the UPSC. यूपीएससी के मेंबर होने के लिए एज सच कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है. However, members are usually experienced in public service or have held important position in the government. So this means they have lots of experience and knowledge about how the government actually works. ठीक है, हालांकि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है, लेकिन इट इज मैंडेटरी कि उन्होंने सर्विसेज, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में या पब्लिक हो गया सेंट्रल लेवल पर पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन हेल्ड करी हुई है ताकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो. And term of office, members can serve in the UPSC for 6 years or until they reach 65 years. After that, after their term, they cannot just hold certain position in the government to ensure, and uh, this provision is there so that they remain fair and unbiased. Okay, so here it is also mentioned that chairman of UPSC is not eligible for any future appointment. मतलब एक बार अगर आपको चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया गया यूपीएससी का, उसके बाद आप कोई दूसरी जॉब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नहीं कर सकते हो. ओके, एंड फंक्शंस क्या है आखिरकार यूपीएससी के? तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट्स व्हाट? ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज फॉर डिफरेंट इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है तो एग्जाम तो कंडक्ट कराएगी ही. साथ ही साथ besides these exams, the UPSC also helps recruit people through interviews and other methods for various government position. ठीक है, तो स्टेट सर्विस के लिए भी करती है. अगर मान लीजिए किसी स्टेट ने रिक्वेस्ट करी है and it is being done on the demand of the governor of that particular state and with the consent of the president of India, so UPSC उस स्टेट की भी रिक्रूटमेंट, उस स्टेट के भी सिविल सर्वेंट की रिक्रूटमेंट करा सकती है. Now, besides recruitment, students, UPSC also advises President of India on matters related to personnel management such as appointment, promotion, and disciplinary actions.
So the UPSC ensures that the selection process for government job is fair and based on merit, so that the best people get chosen. So UPSC advises the government for what? It advises the government on disciplinary actions for employees in certain cases to ensure fairness. Now, this point brings us to the news article. तो अब यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में या फिर किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट में लिया जाएगा कि नहीं. तो पूजा खेडकर, शी हैज secured the candidature in all India service exam through false means, है ना. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एग्जाम था उसमें फॉल्स सर्टिफिकेट्स शो किए. ओके, तो फॉल्स सर्टिफिकेट शो किया, so she was found guilty. Okay, she was found guilty and Union Public Service Commission has debarred her candidature. उनका कैंडिडेचर डिबार कर दिया है फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड सेलेक्शंस ऑफ द कमीशन. अब पूजा खेडकर यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका कोई भी एग्जाम में शी विल नॉट बी एलिजिबल टू राइट दोज एग्जाम्स. ओके, एंड उनको सिलेक्शन के लिए भी मना कर दिया. तो बेसिकली उनका कैंडिडेचर ही कैंसल कर दिया गया है. ओके, सो डिसिप्लिनरी एक्शन जब लिया जाता है किसी भी कैंडिडेट के अगेंस्ट में या फिर किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, सो यूपीएससी हैज आल्सो बीन कंसल्टेड इन दोज मैटर्स. ठीक है, so UPSC is like a big selection board that ensures the best and most qualified people are chosen for important government jobs. So that is why they follow the rules set by the Constitution of India and work to keep the selection process fair and transparent. So इन्होंने क्या किया था, she has actually submitted fake eligibility certificates. उन्होंने फेक सर्टिफिकेट सबमिट किया था और जिसके बारे में जब पता चला तो यूपीएससी ने फिर एक्शन लिया. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यूपीएससी इज व्हाट? यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड गवर्नमेंट एग्जाम रिक्रूटमेंट एजेंसी. ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसके और भी फंक्शंस है, जैसे एडवाइजरी रूल, एडवाइजरी क्या है फंक्शन इसका, डिसिप्लिनरी मैटर्स में क्या इसका फंक्शन है, और रिक्रूटमेंट के साथ साथ कंडक्ट भी करती है ये एग्जाम्स. तो ये सारे फंक्शंस यूपीएससी के हैं. इट इज मेंशन इन आर्टिकल 315 to 323. ठीक है. All right, students. So that's all about UPSC. If you have any doubt, you can ask me in the comments below. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye bye, students. Have a happy learning.